Next topic is of regulation of gene expression. Regulation of gene expression. How gene expression is regulated and where gene expression is regulated. जीन एक्सप्रेशन कहाँ होता है और कैसे होता है. जीन अपने आप को एक्सप्रेस बहुत सारी जगह पे करती है, वेरियस लेवल पे करती है. जब ये बनती तो करती है, ट्रांसपोर्ट होती तो करती है, जब ये फंक्शन करती है, अपना प्रॉपर फंक्शन करती है तो करती है. यानी इट रेगुलेट इटसेल्फ एट वेरियस लेवल. फॉर एग्जांपल, जीन रेगुलेट एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल. Transcriptional level, where gene is transcribed in the form of messenger RNA, where it will be regulated. How the transcription will be there and how it is regulated. कैसे transcription होगा? तो it is the primary level. Then next one is of processing level. Processing level means after the formation of messenger RNA, the messenger RNA will be processed. That is a processing level, and that will be changed into newly formed messenger RNA changed into developed messenger RNA. So it will be again regulate at the processing level. Then messenger RNA transport to cytoplasm, where it is also regulated itself. न्यूक्लियस से ये साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहां भी अपने आप को रेगुलेट करती है. एंड नेक्स्ट वन इज ऑफ ट्रांसलेशन. Translation means from the messenger RNA, again that particular type of polypeptide chain or particular type of protein will be formed, where again it will be regulated. Its expression means how it is represent, how it is formed, the different types of proteins or enzymes or different types of characters. So mainly it is expressed itself or regulated the gene expression at mainly 4 level. Transcription level, from DNA to messenger RNA is formed, then processing of messenger RNA, then transporting of messenger RNA from nucleus to cytoplasm, and again then translation level, where that messenger RNA formed the particular type of protein. So suppose if anything is there or not, कोई भी, for example we say that is beta galactosidase. Beta galactosidase is a type of enzyme. Beta galactosidase is a type of enzyme which convert the lactose, lactose into beta galactose and glucose. Beta galactose and glucose. Beta galactosidase is a type of enzyme which convert lactose, another type of disaccharide, means it is a type of enzyme which convert disaccharide lactose into beta galactose plus glucose. तो lactose को किसमें कन्वर्ट करता है? galactose plus glucose के अंदर कन्वर्ट करता. Suppose if lactose is not there, lactose नहीं है साइटोप्लाज्म में, तो ये बन गया, इसका क्या काम होगा? तो at that time again gene will be regulated itself in the cytoplasm. Beta in the cytoplasm lactose is there or not. Lactose है तभी बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन होगा. अगर लैक्टोज नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन नहीं होगा. मीन्स इट इज रेगुलेटेड इटसेल्फ. It's regulated its expression. In the next step, that particular type of enzyme will form or not formed. Gene regulation occur in
embryonic stage also at various level. From embryo to the new young one will be formed, and in new young ones many things, many organ system is there, but in initial stage only single zygote or single cell structure is there, that will be developed into whole organism. So where that zygote nucleus or zygote DNA express their characteristics and regulated in the various level at various stages. So the gene regulated itself it very particular level. हर ऐसा नहीं कर सकते, कहीं पे भी इसने अपना फंक्शन गलत किया और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है, उसके लिए वो हार्मफुल हो सकता है. सो जीन रेगुलेशन अकर, expression is very particular and very in particular definite manner is there. This is the gene regulation or regulation of gene expression. In prokaryotic cells, different types of models is explained, that is known as operon models. Operon models of gene expression. That is lac operon, which is expression in which the lactose beta galactosidase enzyme expression is there, that is known as lac operon. Another one is his operon, well operon, these are the different types of operon model which we can understand the how gene regulation is there or how gene expression is regulated by the particular type of gene at various level. तो ये कुछ मॉडल है जिनसे अपन समझ सकते हैं कि कैसे कैसे जीन अपने आप जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेटेड होता है. लेक ऑपेरॉन मॉडल, हिज ऑपेरॉन मॉडल, अनदर वन इज ऑफ वेल ऑपेरॉन मॉडल. इसी तरह से एक और ऑपेरॉन मॉडल होता है जिसको अला ऑपेरॉन मॉडल कह सकते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपेरॉन मॉडल. तो ये अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अलग अलग तरह के सबस्ट्रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. जस्ट लाइक आई explain you that lac operon model in which the beta galactosidase enzyme is formed that convert lactose into galactose and glucose. तो अगर सपोज ये ही नहीं है तो ये बनके क्या करेगा, तो जीन उसी तरीके से इसका फॉर्मेशन करेगी, जब ये होगा तभी इसका फॉर्मेशन करेगी, तभी जाकर के अगला काम होगा. तो ये इसी तरह से दूसरे फंक्शन भी कंट्रोल्ड होते हैं. वी अंडरस्टैंड रेगुलेशन ऑफ जीन विद द हेल्प ऑफ वन मॉडल, दैट इज ऑफ द लेक ऑपेरॉन. लेक ऑपेरॉन मॉडल, लेक ऑपेरॉन मॉडल गिवन बाय द Jacob and Monod. These are the two scientists which both explain the lac operon model. What is the lac operon model? Through this model, the particular gene is express itself in various manner at various level. In different types of gene is there. First of is that is I gene. I gene, that is of repressor gene. Repressor gene which is repress or induce that particular type of gene to coding for the another type of messenger RNA. And another is of that is another gene of these, that is ZYA. Z gene which synthesize the beta galactosidase, Y gene that synthesize the primase enzyme, and A gene that synthesize the transacetylase. So
in the lac operon, these 4 gene is there. First one is of I gene, which known as inducer. Its function is of positive manner and negative manner in both the side. Positive manner भी होता है और negative भी होता है. Positive manner, if the substrate is there, substrate on which function will be occur. अगर substrate है तो ही आगे फंक्शन होगा. सबस्ट्रेट नहीं है, ये सब बन गए तो किस पे फंक्शन होगा? तो इन सब का काम डिस्टर्ब हो जाएगा. तो it is work in the positive manner and negative manner. For example, the Z gene produce the beta galactosidase enzyme, and which is work on the lactose, which convert lactose, the disaccharide, into two monosaccharide, that is galactose and glucose. Suppose if lactose is not there in the cell, what will be the function of beta galactosidase? What will be the function of primase? What will be the function of transacetylase? So here I gene, that is repressor gene, do function in positive manner if lactose is there. If lactose is not there, it will be do function in negative manner. तो ये positively भी work करती है और negatively भी work करती है. Negatively that work as an inhibitor, positively work as a accelerator in it, which that will be from the beta galactosidase. Now we explain this model, which is given by the Jacobian monad. Suppose this is the particular type of gene. This one is of promoter, P promoter. This one is of I gene, that is the repressor gene, and again another one is of promoter. This one is of operator, O for operator. Then Z gene, Y gene, and A gene. Suppose this I gene produce a messenger RNA, which is known as repressor messenger RNA. Repressor messenger RNA, and that produce a particular type of protein that is known as repressor. It produce particular type of protein that is repressor, and which suppress the function of this gene. Suppose lactose is not there, लैक्टोज नहीं है सेल के अंदर, तो इन Z जीन का से Y जीन से और A जीन से जो बनने वाले एंजाइम है उनका क्या फंक्शन है? कोई फंक्शन ही नहीं होगा. दैट टाइम इट विल बी बाइंड विद दिस ऑपरेटर जीन एंड इट सप्रेस इट्स फंक्शन. यानी ये I जीन रिप्रेशर मैसेंजर आरएनए बनाता है, इससे रिप्रेशर टाइप का प्रोटीन बनता है, और अगर लैक्टोज नहीं है तो ये क्या करता है? ये इस ऑपरेटर जीन को बाइंड अप कर देता है और फर्दर फंक्शन के लिए इसको स्टॉप कर देता है. सपोज लैक्टोज इज देयर, व्हाट विल बी हैपन? सपोज लैक्टोज है, दिस इज P जीन, दिस इज I जीन, अगेन दिस इज प्रोमोटर जीन, दिस इज ऑफ ऑपरेटर जीन, दैट वन Z जीन, Y जीन, और ये A जीन. सपोज repressor lactose is there, this is of lactose is there, and lactose will be bind this the repressor protein. lactose क्या करेगा? इस repressor protein से bind up हो जाता है, और this one is known as inducer. इसको क्या कहते हैं? and इसको क्या करता है? repressor जो लैक्टोज जो है उसको अपन इंड्यूसर कर सकते हैं, और वो रिप्रेशर जीन को क्या करता है? इनएक्टिव द रिप्रेशर, इनएक्टिव द रिप्रेशर. अगर सपोज सेल के अंदर लैक्टोज है जिसको अपन इंड्यूसर कर सकते हैं, और वो इंड्यूसर किससे? इस रिप्रेशर से बाइंड अप हो जाता है और इस रिप्रेशर को इनएक्टिव कर देता है. अब ये ऑपरेटर जीन ऑपरेट होता है, एंड इट विल बी फॉर्म्ड particular type of messenger RNA. It will be formed particular type of messenger RNA, and that will form beta galactosidase, another one is primase, and another one is of transacetylase.
three type of enzyme will be formed from these three genes. Z gene produce beta galactosidase, and the beta galactosidase convert lactose into glucose and galactose. Glucose and galactose. And primase enzyme increase the cell membrane permeability. That primase enzyme increase the cell membrane permeability, transporting for the बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिससे एक सेल से दूसरी सेल में बीटा गैलेक्टोसाइडेज मूव कर सकता है और वहां पर वो जाकर के फंक्शन कर सकता है. एंड ट्रांसएसिटाइलेज also help in the formation of different bonds, new types of components also, compounds also. So all the three enzyme will do functions if the lactose is there. तो lactose जो substrate है तो function होगा, substrate नहीं है तो यहीं पर इसका function रुक जाएगा. So in this way Lac operon model यानी this gene express it two different stages. This is the Lac operon model.